Dear students, I'm going to present to you a real-life example of the application of the multinomial distribution. Suppose that the ethnic distribution of the population of a very large Western city is as follows. 65% of the population is white, 20% is black, and 15% is Hispanic. Suppose that a jury of 12 members is to be chosen from this city in such a way that each resident has an equal probability of being selected independently of every other resident. So if this is the situation, then I have three questions here. The first one, what is the probability that the jury contains 7 white, 3 black, and 2 Hispanic members? That's one. Another one, what is the probability that the jury contains 4 white and 8 other members? And the last one, what is the probability that the jury contains at the most 1 black member? तो स्टूडेंट्स, इसमें आप ये नोट करें कि ये जो तीनों केसेस हैं, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, they are different special cases of the multinomial distribution. Let's look at the very first one. The very first question, what is the probability that jury contains 7 white, 3 black and 2 Hispanic members? तो इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि what is the value of k, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जनरली हम ये कहते हैं कि मल्टीनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में k कैटेगरीज, k पॉसिबल रिजल्ट्स हैं फॉर एवरी ट्रायल. तो यहाँ पे व्हाट इज k? इट इज क्वाइट ऑब्वियस, k इज इक्वल टू 3, इसलिए कि देर आर 3 पॉसिबल रिजल्ट्स. यानी अगर आप एक शख्स को रैंडमली सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आइदर ही और शी कैन बी वाइट or black or Hispanic. So if k is equal to 3, my dear students, then obviously you are dealing with the trinomial distribution. यानी multinomial को हम इस केस में trinomial कहेंगे because k is equal to 3. All right, now the next thing is that what are the values that I have to put in my formula. अगर ये trinomial है तो then it is given as follows. The probability that capital X1 is equal to 7, capital X2 is equal to 3, and capital X3 is equal to 2 is equal to n factorial over x1 factorial into x2 factorial into x3 factorial, and this whole thing multiplied by p1 raised to x1 into p2 raised to x2 into p3 raised to x3. Of course, ये जो कुछ मैंने कहा आपने अब तक अखज़ कर लिया होगा कि x1 जब मैं कह रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ jury members who are white. x2 जिस वक्त कह रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लैक वंस, और x3 आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्पैनिक वंस. तो चूँकि क्वेश्चन ही यही था हमारा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर 7 वाइट, 3 ब्लैक and 2 Hispanic, then obviously this is exactly what I have to put in my formula. The probability of x1 being equal to 7, x2 being equal to 3 and x3 equal to 2. तो अब ये जो फॉर्मूले में हमने अब क्या इसके अंदर रखना है, ऑब्वियसली n की वैल्यू पुट करेंगे, p1, p2, वो जो कुछ है वो हमने वहाँ पे पुट कर देना है. So what is n? Students, it is obvious that n is equal to 12, क्योंकि आपकी ज्यूरी जो है that has to be containing 12 people. तो आपका जो गोया आप इसको सैम्पल साइज कह लें, कुछ कह लें, नंबर ऑफ ट्रायल्स, दैट इज 12. उसके बाद नीचे जो है उस फॉर्मूले में x1 फैक्टोरियल into x2 factorial into x3 factorial, obviously that is 7 factorial
into 3 factorial into 2 factorial. उसके बाद जो उसके साथ और चीज़ें लगनी हैं, p1 raised to x1 और p2 और इस तरह, तो वो हम पहले से हमें बताया जा चुका है. वो जो पहली जो टेबल थी हमारे सामने, which told us that in that particular western city, the population that is white is 65%, the population that is black is 20%, and the Hispanic population is 15% of the total. So students, यही numbers जो हैं, obviously these can be regarded as the probabilities, meaning that P1 is equal to 0.65, P2 is equal to 0.20, and P3 equal to 0.15. Why can I regard these as probabilities? Well, it is because of the relative frequency definition of probability. जब इतना बहुत बड़ा एक शहर है, उसके अंदर जो proportion है, of course that is the probability कि अगला बंदा जो मैं select करूँगी, this person will be of this particular type. तो अब अगर ये बात आपको clear हो गई, तो then it's quite simple. हमारा जो formula है, उसके अंदर आप insert कर दीजिए 0.65 raised to 7, यानी P1 raised to x1, into 0.20 raised to 3, यानी P2 raised to x2, into 0.15 raised to 2, yani P3 raised to x3. Just solve it, and what's the answer? The answer is 0.0699, yani 6.99% or 7%. So this is the answer to this first part of the problem. Now let's look at the second one. Second में हमें कहा गया कि what is the probability that the jury contains 4 white and 8 other members. यहाँ पे आप नोट करें कि जैसे ही हमने other कहा, तो हमने black और Hispanic को इकट्ठे कर दिया. We are not treating them as different categories. उनको इकट्ठा करके हम कह रहे हैं कि ये जो white हैं ये वाले, और ये वाले जो हैं these are non-white कह लें, other. So students, जैसे ही आपने वो इकट्ठे कर दिए, अब आपके पास 3 categories नहीं हैं. Now you have only 2 categories, white and non-white, yeah, other. So therefore, this time we are not dealing with the trinomial distribution. Rather, I think you've got it, we are dealing with the binomial distribution, because now k is equal to 2. और फिर उसके बाद उसी तरह उसको proceed कर लीजिए. I do not think I should have to do it. However, let me tell you this much, कि जब आप black और Hispanic को इकट्ठा करेंगे, तो आप उन percentages को भी तो ऐड कर लेंगे ना. So 20% black, 15% Hispanic. So when you combine them, you say that there are 35% non-white people. So अगर आप binomial में आप जानते हैं कि generally हम P और Q कह रहे होते हैं, तो अगर white को success कहें, तो P is the probability of success. So P is equal to 65%, यानी 0.65. और वो जो other हैं, जिसको अगर आप technically failure कहें, तो failure की probability को हम Q से represent करते हैं. So Q is equal to 35%, यानी 0.35. Of course, P plus Q has to be equal to 1. 0.65 plus 0.35 is equal to 1. तो इसको भी आप solve कर लें आसान तरीके से, and this time the answer comes out to be 1.99% या 2%. Last one is just almost exactly the same thing. यहाँ पे question क्या है कि what is the probability that the jury contains at the most 1 black member. देखिए अगेन इट्स द सेम थिंग. पहले हमने वाइट को अलग किया था और बाकियों को इकट्ठे करके नॉन वाइट कह दिया, और अभी हम ब्लैक में इंटरेस्टेड हैं. वाइट और हिस्पैनिक को इकट्ठा करके वी कैन कॉल देम नॉन ब्लैक. सो अगेन वी हैव ओनली 2 कैटेगरीज, ब्लैक एंड नॉन ब्लैक, और वही सक्सेस एंड फेलियर. बीइंग ब्लैक इज सक्सेस इन दिस पर्टिकुलर केस, बीइंग नॉन ब्लैक इज फेलियर, और इसी तरह से
You can do it. I'm not going to do it for you. It is very, very simple. इतनी सी बात ज़रूर याद रखें कि जब at the most 1 कह रहे हैं, then we have to put x equal to 0, meaning कि not even 1, and then after that we have to put x equal to 1, यानी कि 1, and then we have to add those two, क्योंकि जब हम कहते हैं कि at the most 1, obviously it means either 0 or 1, और आप जानते हैं कि जब either or होता है, then we have to add those probabilities. Adding them, the answer comes out to be 27.5%, but the calculations have to be done by you, which I'm sure you will do in 2 minutes.